I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. So today we are going to discuss remaining points from your beta lactam antibiotics, and that is nothing but the cephalosporins. So we was started with our pharmacology of beta lactam antibiotics, and from that we have completed our penicillins. So we was started with the antibacterial drug. From that we have seen general consideration. After that we have seen the sulfonamides, nitrofurans, and fluoroquinones antibiotics. After that, yesterday, in the day before yesterday, we have seen the penicillins also. Today we are going to see cephalosporins. Today we are going to see cephalosporins. Right. So what we have seen yesterday, we have seen the penicillins. So what is important from penicillin? So I would like to revise you again. Very important. Source is important, and discovery is important. Penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1929. And it was isolated from Penicillium notatum, first fungus, but after that its mutant commercially it is obtained from Penicillium chrysogenum. Initially Penicillium notatum से आया था, बाद में उसका mutant जो है Penicillium chrysogenum उससे आया है. After that question already आ चुका है कि basically penicillins are nothing but the derivatives of 6-aminopenicillinic acid. In that 6-aminopenicillinic acid, thiazolidine ring is connected or fused with the beta lactam ring. This is important. इसके ऊपर वो दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है. So which one is the thiazolidine ring? I have already told you. This one is the thiazolidine ring, and this one is the beta lactam ring, right? So we have seen the classification also. So what do you mean by penicillin G? Penicillin G means benzyl penicillin. इसके ऊपर already question आ चुका है. Penicillin V मतलब क्या? Penicillin V मतलब phenoxymethyl penicillin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ना. Likewise that beta lactamase inhibitor कौन है? clavulanic acid, sulbactam, tazobactam. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. extended spectrum penicillins और anti pseudomonas penicillins कौन है? उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. इसमें तीन कैटेगरीज है, कार्बोक्सीपेनिसिलिन, यूरिडोपेनिसिलिन एंड अमीडोपेनिसिलिन. इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने याद रखना है, ठीक है. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम ऑलरेडी वी हैव सीन. आफ्टर दैट वी हैव सीन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. दे विल बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन which are on surface of bacteria, and after binding to the penicillin binding protein they inhibit the one enzyme known as a transpeptidase. So role of transpeptidase is nothing but the cross linking of cell wall in the bacteria. Mostly gram positive bacteria जो होते हैं उसमें peptidoglycan layer होता है, and cross linking of peptidoglycan will provide strength and rigidity to the bacterial cell wall. Penicillins by binding to a penicillin binding protein in the inner surface of bacterial cell membrane cell, and that inhibit the transpeptidase and prevent the cross linking of polymer. We prevent the cross linking of that peptidoglycan and prevent the rigidity and strength up to the cell wall. Obviously cell wall weak हो जाएगा, cell wall properly नहीं बनेगा तो cell content बाहर आ जाएगा. And penicillin also initiate the cell lysis, you know, autolytic system in the bacteria. That is the mechanism we have already seen. After that we have seen the how bacteria will get resistance to the penicillins. It may be either natural way or it may be acquired, but acquired resistance to the penicillin is not getting easily. The bacteria has not got acquired resistance. Whatever resistance to the penicillins are there, they are because of the natural resistance. Most of the bacteria will produce gram negative bacteria. Obviously they produces the beta lactamase enzyme, but some gram positive bacteria also today they produces the beta lactamase. That is the natural resistance. After that we have seen the another one is the penicillinase. They are produced by staphylococcus
Bacillus subtilis, Gonococci, E. coli, Haemophilus influenza, which will also open the beta lactam ring. Same जो बीटा लैक्टमेज होता है वो भी बीटा लैक्टम रिंग ओपन करता है, पेनिसिलिनेज होता है वो भी बीटा लैक्टम रिंग ओपन करता है. एंड एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन इज बिकॉज ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग. आफ्टर दैट वी हैव सीन द बेंजाइल पेनिसिलिन. याद रखना है. सो बेंजाइल पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ट्राइपोनेमा पेडिलियम इन्फेक्शन मीन्स सिफिलिस. एंड 1 unit of penicillin G, 1 international unit of penicillin G is equal to 0.06 है ना, sorry, 1 international unit of penicillin G, benzyl penicillin is equal to 0.6 microgram of penicillin. Okay, or 1 milligram of penicillin contained 1.6 million units. तो सेम थिंग है. इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में एडीएम में देखा है अपन ने, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड, they are destroyed by acid. That's why acid resistant penicillins was discovered. Yeah. You can increase the half life of penicillin because penicillins are short acting, so you can you can increase the half life by using probenicillin. Probenicillin क्या है, यूरिकोसोरिक एजेंट है. It will compete for the excretion in renal tubule for penicillin, and they will improve the kinetics, they will improve the half life of penicillins, right? Penicillin salt भी बनाए हैं जैसे बेंजीथिन पेनिसिलिन, then procaine penicillin, they is also having longer duration action. After that we have seen the adverse drug reaction. So important आपका adverse drug reaction कौन सा important, anaphylaxis, because penicillins are the most vulnerable antibiotic which can cause anaphylaxis. Drug of choice क्या है anaphylaxis में, adrenaline. Adrenaline is a drug of choice in case of anaphylaxis. We have already seen, just I am repeating. Then other symptoms we have already seen. Okay, important क्या याद रखना है आपको, वो याद रखना है आपको. ठीक है. आफ्टर दैट जेरिस एक्सामिनर रिएक्शन, जेरिस एक्जिमा रिएक्शन, देन सुपर इन्फेक्शन we have seen. I have told you about super infection. Now remember skin test to check the sensitivity of penicillin. In that क्या आता है कि पेनिसिलिन का जो प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट, तो लाइक पेनिसिलिन polylysine, penicillyl polylysine, that is a injected that is a scratched skin scratch, and this is a drop of this penicillyl polylysine is inoculated on the skin, and local inflammatory response is observed. If there is an inflammatory response, that means you are sensitive to the penicillin, and you should not use penicillins. Only one drug is available. अगर पेनिसिलिन का अगर सेंसिटिविटी है, पेनिसिलिन से अगर एलर्जिक होता है, आपको एलर्जिक हो, तो उसमें सिर्फ एजोट्रोनाम एक ही ड्रग है, एजोट्रोनाम पेनिसिलिन का, बीटा लैक्टम का, वो ही यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं. आफ्टर दैट वी हैव सीन द थेरेप्यूटिक यूजेस में याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस एंड न्यूरोसिफिलिस, 3 याद रखना है आपको. बाकी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंथ्रैक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, फ्रेंच माउथ, रेड वाइट फीवर एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये भी है. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव सीन द बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मिथिसिलिन है ना. मिथिसिलिन को भी आजकल आ चुका है रेजिस्टेंट, तो दैट्स व्हाई देयर इज वन टर्म मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. मतलब 2 टाइप के स्टेफिलोकोकस ऑरियस है. देयर आर 2 टाइप ऑफ दिस ऑरियस. Some are sensitive for the penicillins, methicillin, like methicillin, and some are resistant. So those Staphylococcus aureus which are resistant to the methicillin, they are known as the MSRA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. So in that case ये methicillin से नहीं मरते. तो obviously इनके लिए ड्रग कौन सा है फिर, vancomycin. Vancomycin is a drug of choice in case of methicillin resistant Staphylococcus aureus infection. एंड जिसको वैंकोमाइसिन को भी रेजिस्टेंस आ चुका है, उसको बोलते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस. उसमें ड्रग कौन सा दिया जाता है, उसमें ड्रग दिया जाता है लिनेजोलिड. तो लिनेजोलिड इज ड्रग ऑफ चॉइस इन वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंड वैंकोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन methicillin resistant Staphylococcus aureus, है ना. So that we have seen the penicillins which are effective against gram positive, gram negative, means है ना,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है ना पेनिसिलिन, तो उसमें एम्पलीसिलिन है, अमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन है, एम्पलीसिलिन है। एम्पलीसिलिन का एक एडवर्स इफेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि इट कॉजेज द pseudomembranous colitis, pseudomembranous colitis करता है, and that's why it causes the diarrhea because it is a broad spectrum effective against the gram negative as well as gram positive bacteria. Most of the penicillins gram positive bacteria के ऊपर इफेक्टिव होते हैं, है ना. Telampicillin, Bicampicillin, Pivampicillin, they are the products of ampicillin. Amoxicillin has some less adverse effect, like less diarrhea. वो एक एडवर्स इफेक्ट याद रखना. एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में यूरिडोपेनिसिलिन आता है ना, जैसे पिपरेसिलिन. पिपरेसिलिन इज आल्सो इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एंड आल्सो एंटी सुडोमोनल. आल्सो नोन एज एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन. So it is 8 times more active than कार्बेनिसिलिन. इसमें कार्बेनिसिलिन है ना, डाइकार्सिलिन, इसके बाद में पिपरेसिलिन, ये ड्रग्स आते हैं, हाइजोसिलिन, मीजोसिलिन. After that we have seen the clavulanic acid, so it is a beta lactamase inhibitor. Actually ये antibiotic नहीं है, it is not an antibacterial drug, it has very weak antibiotic activity, but it is a potent and irreversible inhibitor of beta lactamase. तो ये beta lactamase को inhibit करता है, पेनिसिलिन का prevention करता है. So that's why penicillins are combined with the beta lactamase inhibitor like clavulanic acid. उसका बाद में आ चुका है आपका सल्बैक्टम बाद में आया क्लेवुलिक एसिड के बाद में. देन टैजोबैक्टम आ गया. टैजोबैक्टम, सल्बैक्टम, क्लेवुलिक एसिड, these are the beta lactamase inhibitor. First time it was produced by the Streptomyces clavuligerus. So Streptomyces clavuligerus is the organism. It is the name of fungus from which clavulanic acid was first time isolated. It is not an antibiotic, but it inhibits the beta lactamase irreversibly, and that's why so increases the effectiveness of penicillins. So that's why combined with the आपने एक combination देखो, combination you might have seen amoxicillin and clavulanic acid, amoxiclav. वो combination बहुत फेमस है ना, moxclav है ना, ये बहुत सारे ब्रांड आते हैं इसलिए amoxiclav के. They are effective in a Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, E. coli, Neisseria, gonorrhea, like that. Right, we have seen. Now cephalosporins. So cephalosporins क्या है? They are also a beta lactam antibiotics. Cephalosporins are also beta lactam antibiotics, but they are the derivative of 7-amino penicillic acid. Cephalosporins are the derivatives of 7-amino penicillic acid. 7-amino cephalosporinic acid. 7-amino cephalosporinic acid. 7-amino cephalosporinic acid. Penicillins are the derivative of 6-amino penicillinic acid, and cephalosporins are the derivative of 7-amino cephalosporinic acid. तो डिफरेंस वही है कि ये एक cephalosporinic acid का डेरिवेटिव है. डिफरेंस क्या है? Penicillins are the 6-amino penicillinic acid derivative and cephalosporins are the 7-amino cephalosporinic acid derivative. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि थायाजोल रिंग नहीं है, 6 मेंबर्ड है ना, 6 मेंबर्ड pyridazine रिंग है यहाँ पे थायाजोल नहीं है, यहाँ पे है ना pyridazine रिंग होती है. That's why 7-amino cephalosporinic acid. Now cephalosporins they are classified according to the generations. और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि generations of cephalosporins. Cephalosporins are classified according to the generation. So first one is the first generation cephalosporins, and they generations plus whether they are used orally or whether they are used parenterally. So according to that they are classified. First generation में क्या है कि orally used देखो cephalaxin and cephatoxyl. Cephalaxin, cephatoxyl. CEPH
और यहाँ पे देखो सी एफ, उसके बाद में है ए। तो फर्स्ट जनरेशन, हाउ यू कैन रिमेंबर फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन, यू कैन रिमेंबर, है ना, ए आफ्टर सेप और सेफ, है ना, सेप के बाद में ए आएगा, जैसे सेफेलैक्सिन, सेफा, है ना, तो यहाँ पे से सी पी एच के बाद में ए आता है, यहाँ पे सी एफ के बाद में ए आता है। सो फर्स्ट जनरेशन में, है ना, याद रखना है आपको, सी एफ के बाद में ए आएगा। सो ऑल दिस आर द फर्स्ट जनरेशन, सेफेलैक्सिन, सेफेट्रोक्सिल, सेफोजोलिन, सेफोजोलिन इज अ पेरेंटल वन। सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स सेकंड क्लास आएगा आपका, तो उसमें है ना, याद रखना है ओरल, सेफाक्लोर, सेफोरेक्सिम एक्सिटिल, देन सेफोप्रोजिल, पेरेंटल में सेफोरेक्सिम एंड सेफोक्सिटिन, है ना। देन थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, है ना। तो इसमें याद रखना है जीम आएगा, जीम, 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 जीम याद रखना है, सिपिक्सिम, सेफोडोक्सिम, देन सेफडिनिर, जी, है ना, जिम, नीर, मेट अंटेन, है ना, जोन भी आता है इसमें, है ना, जिम, देन नीर, टेन, जिडीम, जिडीम, है ना, जोन, जोन एक्सओएनई या जेडओएनई, जिम एक्सआईएमई, या फिर आपका नीर, ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन है। नाउ फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन, यू कैन रिमेंबर फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन, इसमें क्या है कि पीआई आता है, पीआई, सेफीपाइम, सेफीपायरोम, तो इसमें पीआई आता है। देयर इज आल्सो फिफ्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन, फिफ्थ जनरेशन भी सेफलोस्पोरिन का होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, फिफ्थ जनरेशन कौन है दिखा रहा हूं आपको। Cephalosporins that are classified into different generations. तो फिफ्थ जनरेशन, सो रिमेंबर यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स भी है, तो फिफ्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, सो रिमेंबर फिफ्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, सेप्टा, है ना, सेप्टा रोलिन एंड सेप्टो बायपायरोल, इसमें रोल आएगा ROL, है ना, ROL, तो सेप्टोबायपायरोल एंड सेप्टारोलिन, तो रोल इसमें दोनों में आएगा। तो रोल वाले क्या है, फिफ्थ जनरेशन, याद कैसे रखना है इसको, देखो ऑल सेफलोस्पोरिन्स हैविंग ए, क्लासिफिकेशन याद कैसे रखना है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ, है ना, ऑल सेफलोस्पोरिन हैविंग ए आफ्टर सेप और CF और CEPH, है ना, इज अ फर्स्ट जनरेशन, है ना, एक्सेप्ट सेफाटोर, सेफाटोर इज अ सेकंड जनरेशन, है ना। तो मतलब ऑल सेफलोस्पोरिन्स व्हिच हैव ए आफ्टर CEF और CEPH, दे आर द फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्टोर, है ना, जैसे एग्जांपल दे, सेफाजोलिन है, सेफाटोक्सिल है, दे आर द फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन, है ना, और जो जिसमें पीआई है, जिसमें एंड में पीआई होता है, दे आर द फोर्थ जनरेशन, जैसे सेफोपाइम, सेफीपायरोम, तो पीआई जो आता है वो फोर्थ जनरेशन है। जिसमें रोल आएगा, टर्म रोल, वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन, सेपी, है ना, सेफ्टी बायपारोल एंड सेप्टारोलिन, है ना, सेफ्टी बायपारोल, सेप्टारोलिन, दे आर द फिफ्थ जनरेशन, ना। मतलब याद भी ऐसे रखना है, वहाँ पे उन्होंने बुक्स में ट्रिक्स भी दिया है, और वही ट्रिक्स आपको बाकी लेक्चर वाले बोलेंगे, तो बोलेंगे हमारा है, उनका कुछ नहीं। सो ऑल सेफलोस्पोरिन हैविंग ए आफ्टर सेप, CEF और CEPH, दे आर द फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्टोर,
Cephalosporin is the second generation. Yeah. Then then all cephalosporin which are having PI in the name, इसके नाम में PI है. So like for example cephapime, cephapyrome, they are the fourth generation जिसमें रोल आएगा है ना. They are the fifth generation वाले रोल आएंगे. है ना, सेप्टिबाइपाइरोल एंड सेप्टारोलिन है ना, सेप्टिबाइपाइरोल सेप्टारोलिन. देन ड्रग विच इज एंडिंग विद द एमी, मतलब जैसे सेपिक्जिम, सेपेडोक्सिम है ना, एंड है ना, म्हणजे जिम, टेन है ना एंड झोन है ना, मैंने बोला था जिम झोन है ना, 10, वो सब क्या है, थर्ड जनरेशन है. एक्सेप्ट सेफेरोक्सिम, एक्सेप्शन याद रखना है, सेफेरोक्सिम, दे आर ऑल थर्ड जनरेशन एंड रेस्ट ऑफ द ड्रग दे आर फ्रॉम सेकंड जनरेशन. पेरेंट्रल और ओरल को कैसे याद रखना है, तो जिसमें OR आएगा, जिसमें ड्रग विद द OR, वो सब ओरल है. सेफाक्लोर, सेफाडाइटोरिन, ये इसमें OR आएगा, वो ओरल है. OR फॉर ओरल. इसमें T आएगा, वो इंजेक्टिबल है. राइट. So this is the classification. We'll see it again. So 7 amino penicillinic acid, 7 amino cephalosporinic acid. All cephalosporins are the derivative of 7 amino cephalosporinic acid. 7 amino cephalosporinic acid. So you can see over here, यहाँ पे there is another ring है ना. Here is not a thiazole ring. There is another ring, 6-membered ring is there. And this one is a lactam ring. And this is 7th position. So 7 amino cephalosporinic acid. All these are the derivative of 7 amino cephalosporinic acid. So cephalosporins, they are nothing but the derivative of 7 amino cephalosporinic acid. है ना. इनमें क्या आता है, सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, सेफामाइसिन आते हैं, सेफामाइसिन्स, दे आर सिमिलर टू सेफेलोस्पोरिन बट दे आर डेरिवेटिव फ्रॉम एक्टिनोमाइसिट्स. तो सेफेलोस्पोरिन्स कहाँ से आता है, फंगस से आता है, लेकिन सेफामाइसिन्स एक्टिनोमाइसिट से आता है. नाउ द सेफेलोस्पोरिन फर्स्ट टाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम सेफेलोस्पोरियम एक्रेनोमियम. सेफेलोस्पोरियम एक्रेनोमियम. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, सेम. दे हैव सेम मैकेनिज्म एक्शन एज दैट ऑफ द पेनिसिलिन्स. तो दे आल्सो इनहिबिट द सेल वॉल synthesis in the similar way as that of the penicillin. Penicillin के जैसे by binding to a penicillin binding protein, they inhibit the transpeptidase enzyme and prevent the cell wall synthesis. They are the bactericidal है ना. ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव है, बट ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत है. They are resistant to the cephalosporin. Resistance to the cephalosporin also can develop, but slowly. Bacteria can develop resistance to the cephalosporin slowly, and that is mediated by beta lactamase, or there is a decreased entry of drugs into the cell, decrease the bacterial permeability to the drug. Cross resistance to the other beta lactam antibiotic is also there. क्रॉस रेजिस्टेंस भी होता है इसको. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या है, किस किस बैक्टीरिया में इफेक्टिव है. वैरायटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर एक्टिव अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यूमोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी ग्रुप, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी ग्रुप. देन ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. ये जो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ना, ग्रुप ए बीटा hemolytic streptococcus, उसमें भी इफेक्टिव है. दे आर एक्टिव अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकाई. स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट में नो सेफेलोस्पोरिन इज अवेलेबल एट प्रेजेंट विच इज एक्टिव अगेंस्ट द
स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, तो स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस में अभी भी कोई सेफलोस्पोरिन अवेलेबल नहीं उस जो एक्टिव है. दे आर आल्सो एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम, है ना. ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स आर ससेप्टेबल फॉर दिस एंटीबायोटिक्स, है ना. जैसे ई कोलाई है आपका, एन नेसेरी गोनोरी है, साल्मोनेला टाइफी सिजेला, ये जो है ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी क्या है, सेंसिटिव है, मतलब ये भी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी मारते हैं. द पेनिसिलिन मोस्टली इफेक्टिव ना ग्राम पॉजिटिव, बट सेफलोस्पोरिन्स ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव. तो उसका एडीएम में देखो, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन. तो लाइक अ पेनिसिलिन्स when given by intramuscular route, you know, they can be given by oral route, they can be given by injectable route. When given intravenously they are painful injection, मतलब इनका इंजेक्शन थोड़ा सा पेनफुल होता है. they are mostly eliminated by renal tubular secretion, tubular secretion में eliminate होते हैं. that's why in case of renal failure these drugs are contraindicated in case of this. Okay, some of these drugs are also when used along with the diuretics they will increase the kidney toxicity. Probenecid can increase the plasma level. Probenecid क्या है? Probenecid is a uricosuric drug that can increase the half life of this drug. Cefotaxime is partly metabolized and है ना in the liver and then it is excreted. Cefotaxime है ना, ceftriaxone जो ड्रग है ना, that is excreted in the bile. तो एडवर्स रिएक्शन देखो इनकी क्या है. लोकली दे कैन कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है तो इंटरवेनस इंजेक्शन कैन कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. दे कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्किन रैश, फीवर, serum sickness, asthma, urticaria. Rarely they can cause anaphylactic reaction, neutropenia, transient splenomegaly. Then superinfection can occur with after the use of these cephalosporins. Particularly जो third generation cephalosporins होते हैं, so broad spectrum cephalosporins they can result into superinfection. Nephrotoxicity मतलब kidney toxicity with the large doses and can be reversed upon withdrawal of therapy. Now, nephrotoxicity of this drug can be increased by loop diuretic like furosemide और aminoglycoside भी ये इनका नेफ्रोटॉक्सिटी बढ़ाते हैं ना. ब्लड टॉक्सिटी क्या है? इट कैन कॉज ब्लीडिंग, hypoprothrombinemia, abnormality in the platelet aggregation that can be reversed by vitamin K therapy. Common drug with the methyl thiotretrazole substitution attenuation, जिसमें सेफलोस्पोरिन में जो ड्रग में मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है थायोटेट्राजोल, वो ब्लड टॉक्सिटी करेंगे. सेफोपराजोन एंड सेफ्ट्राक्सोन they are excreted in the bile. Remember, disulfiram like reaction when taken along with the जब कोई अल्कोहल लेता है और उसके बाद में ये ड्रग्स कंज्यूम करता है, if you take alcohol and if you take cephalosporins you may have disulfiram like reaction, particularly with the cefoperazone. Then neutropenia, thrombocytopenia they are also reported. Drug fever, याद रखना है ड्रग फीवर. Cephalosporins are amongst the most common antibiotic which causes the drug fever. ड्रग फीवर करने में सबसे ज्यादा माहिर होती है. नाउ थेरापेटिक यूजेस ऑफ cephalosporins, तो किसका यूज क्या है? सो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म. Cephalaxine, Cefodime still have beneficial use in the treatment of community acquired respiratory and urinary tract infection. तो Cephalaxine, Cefodime ये जो फर्स्ट जनरेशन जो है still है, they are useful in the treatment of community acquired RTI and UTI. They are also used for the surgical prophylaxis. सर्जरी होने के बाद में इन्फेक्शन ना हो इसलिए यूज करते हैं.
Cephalosporin is a drug of choice in surgical. Cephalosporin is a drug of choice in case of surgical prophylaxis. For surgical prophylaxis, cephalosporin is a drug of choice. Second generation cephalosporins. They have wide coverage than first generation. They are active against the gram-negative bacilli, Haemophilus influenza. Third generation, they are more active against the gram-negative bacilli than second generation, and they can be used in monoglycoside resistant or multi-drug resistant gram-negative bacillary or bacillary systemic infection. Ceftriaxone is a first drug of choice for gonorrhea. पहले पेनिसिलिन जी था, लेकिन अभी क्या है, Ceftriaxone is the first drug of choice in gonorrhea. For also empirical therapy of meningitis. Cefotaxime is metabolized to active metabolite des-acetyl-cefotaxime. एक पॉइंट याद रखो, ये Cefotaxime is metabolized to des-acetyl-cefotaxime. Ceftriaxone is a drug of choice in gonorrhea, first drug of choice in gonorrhea as well as meningitis. Fourth generation cephalosporins are mostly effective against the gram-negative infections, including sinus infection. They are more resistant to the beta-lactamase. Cefepirome can penetrate into CSF. तो अगेन देखो है ना, सेफोरेक्सिम ये सब ड्रग यूज होते हैं आजकल. सेफोरेक्सिम, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, they are used in the RTI, UTI, soft tissue infection caused by gram-negative bacteria. Ceftriaxone are used in the RTI. RTI मतलब क्या, respiratory tract infection. UTI, soft tissue infection. They are also used for surgical prophylaxis like artificial heart valve. ना क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि आफ्टर आर्टिफिशियल valve, artificial joint replacement, for the prophylaxis drug of choice is that is a ceftriaxone and cephalosporin. Also used in the meningitis, gonorrhea, typhoid. Ceftriaxone and cefpopirazone, they are the drug used in the typhoid. Also used in the mixed infection like aerobic, anaerobic microorganism. कैंसर पेशेंट कोलैटरल सर्जरी में यूज करना है. ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नी इन्फेक्शन. ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोफिलैक्सिस ऑफ न्यूट्रोपेनिक पेशेंट. थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स आर यूज्ड. सेप्टिसिमिया में भी यूज करते हैं अमोनोग्लाइकोसाइड विद द सेफलोस्पोरिन्स. These are the therapeutic uses of cephalosporins. थेरापेटिक यूजेस ऑफ सेफलोस्पोरिन्स. ठीक है, इसके ऊपर कल मैं टेस्ट भी अपडेट करूंगा. टेस्ट विल बी अपडेटेड ऑन दिस, है ना, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, उसके बाद में नाइट्रोफ्यूरॉन्स वगैरह जो हो चुका है ना. यू कैन सी ओवर हियर अगेन, यहाँ पे देखो सेफलोस्पोरिन्स क्लासिफिकेशन में, और एक बार देखो. तो दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन, देन सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन एंड आल्सो फिफ्थ जनरेशन, है ना. तो उनको उसमें भी क्या है, कोई ओरली यूज करते हैं, कोई पेरेंटली. Some drugs are used orally, some drugs are used parenterally. So first generation orally used drug का example क्या है, cephalothene and cephazoline. Cephalothene, they are used orally. Then they are used, cephalothene, cephazoline, they are parenteral drugs first generation. Orally used are nothing but the
cephadroxil, cephalaxin and cephalaridine, right? So cephalaxin, cephadroxil, cephalaridine, they are the oral first generation. Cephalothin, cefazolin, they are the parenteral first generation. Second generation में क्या है? First generation they are effective against the gram positive and less active against the gram negative. But second generation, they are more active against the gram negative. And some are active against the anaerobic organisms also. But none is active against the Pseudomonas aeruginosa. तो फर्स्ट जनरेशन किसके अगेंस्ट में एक्टिव है? ग्राम नेगेटिव. फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव में एक्टिव है, सेकंड जनरेशन ग्राम नेगेटिव में एक्टिव है ना, बट Pseudomonas में नहीं है. थर्ड जनरेशन जो है ना, सेकंड जनरेशन के एग्जांपल देखो, ओरली यूज्ड ड्रग है आपका सेफाक्लोर, सिप्रोक्सिमेक्सिटिल, पेरेंटरली यूज है सेप्रोक्सिम एंड सेफोक्सिटिन. थर्ड जनरेशन cephalosporins, they are highly effective against the gram negative. Then enterobactery, some are also effective against the Pseudomonas aeruginosa and less effective against the gram positive. मतलब फर्स्ट जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव. सेकंड जनरेशन मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव, less effective against the gram positive, no effective against the Pseudomonas. Third generation they are effective against gram positive, less effective against gram positive, you know. They are effective against the gram positive, less effective against the gram negative bacteria, but effective against the Enterobacteria and Pseudomonas. So now third generation में orally used drug कौन से? Cefixime, then cephalosporins, cephadinir, cephobutine, cefixime, cephadroxil, they are oral use. Cefotaxime, ceftriaxone, ceftriaxone and ceftazidime, they are the parenterally used. ठीक है. Now fourth generation में देखो, fourth generation cephalosporins में they are resistant to the beta lactamase, also inhibit the Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. ग्राम नेगेटिव और कोकाइम में भी एक्टिव है. इसमें पेरेंटरली यूज होता है सेफीपाइम एंड सेफीपायरोम, ओरली अवेलेबल नहीं है सेफीपाइम एंड सेफीपायरोम. फिफ्थ जनरेशन भी आ चुका है, जैसे मैंने बोला है सेफारोलिन है ना, एक है फिफ्थ जनरेशन. नाउ कार्बापेनम्स दे आर द डिफरेंट ड्रग्स बट स्टिल दे हैव बीटा लैक्टम रिंग इन द स्ट्रक्चर. कार्बापेनम में भी क्या है कि बीटा लैक्टम रिंग होता है. कार्बापेनम में पहला ड्रग है आपका इमीपेनम है ना. इट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट एंटीबायोटिक थाइनामाइसिन. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बीटा लैक्टम. थाइनामाइसिन का पेरेंट कंपाउंड का मॉडिफिकेशन करके कार्बापेनम बनाया है. थाइनामाइसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम Streptomyces catalea. So beta-lactam antibiotic obtained by modification of parent antibiotic thianamycin obtained from Streptomyces catalea. Drug inhibit bacterial cell wall synthesis. इसका mechanism भी क्या है? Similar to the penicillin. It is a better tolerated, has a wide spectrum of activity than cephalosporins, and it is highly active against the gram negative aerobic including Pseudomonas aeruginosa, gram positive anaerobic and many anaerobic bacteria. तो broad spectrum होता है. So it is a beta lactamase resistant and also active against the chlamydia and mycoplasma species. मतलब थोड़ा बहुत antifungal भी है. ADME क्या है इसका? Does not penetrate intracellularly, therefore it is inactive against the intracellular organism. सेल के अंदर जाके जो बैठा है उसके अगेंस्ट में इनइफेक्टिव. इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइहाइड्रोपेप्टिडेज इन द किडनी, रिनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज. ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है. दो इमीपेनम इज मेटाबोलाइज्ड बाय रिनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम and to prevent this metabolism it is combined with the
combined with the silalastine. ये silalastine क्या है? It is a non-antibiotic compound which inhibit the dehydropeptidase. So inhibitor of renal dehydropeptidase. So it silalastine inhibit करता है dehydropeptidase को ताकि मेरोपेनम का मेटाबॉलिज्म ना हो जाए और उसको वो अपना काम करे. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार. So why imipenem is combined with the silalastine? So imipenem silalastine combination is available because imipenem is metabolized in the renal tubules by dehydropeptidase enzyme, and this silalastine is an inhibitor of dehydropeptidase. Dehydropeptidase का inhibitor होता है silalastine. Now adverse reaction, and they are similar adverse reaction as that of the other beta-lactam antibiotic. तो बाकी बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इनकी जैसे ही एडवर्स रिएक्शंस है. इन एडिशन टू दैट नोशिया, वोमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांजिट इलेवेशन इन द लिवर एंजाइम, जो लिवर का मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसको बढ़ा देगा वो. दे कैन कॉज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस मतलब डायरिया. उसके बाद में थेरापेटिक यूजेस क्या है ना. इमिपेनम के बाद में मेरोपेनम भी एक नया ड्रग है. उसके बाद में इमेरोपेनम. थेरापेटिक यूजेस क्या है? इट इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एरोबिक्स एज वेल एज एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म. So they are usefully, its use is restricted to the treatment of mixed bacterial infection and resistant to the resistant gram negative infection. मतलब ये जो ड्रग है वो रिजर्व ड्रग है, रूटीनली यूज नहीं करते. तो व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन दे आर यूज्ड. रिजर्व ड्रग दे आर यूज्ड इन द mixed infection and gram negative infection which are resistant to other antibiotics, and it should not be used in the meningitis. मेरोपेनम उसका डेरिवेटिव इमिपेनम का. इट इज नॉट ससेप्टेबल फॉर रिनल डायहाइड्रोपेप्टिडेज. जो इमिपेनम को मेटाबोलाइज करता है किडनी में डायहाइड्रोपेप्टिडेज, वो एंजाइम मेरोपेनम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मेरोपेनम इज नॉट ससेप्टेबल. देन इट्रापेनम, कौन सा पेनम? इट्रापेनम. They are the broad spectrum once daily IV carbapenem. दिन में एक ही बार इंजेक्शन देना है इंटरवेनसली. मेरोपेनम is not hydrolyzed by renal dipeptidase and it is a reserve drug for treatment of serious nosocomial infection like septicemia, severe neutropenia, intra-abdominal and pelvic infection. Rifamycin में एक ड्रग आता है रिफाम्पिसिन, and we will discuss this drug in tuberculosis and leprosy. This will end your cephalosporins also. And we'll see this again from this book. कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. सो क्लासिफिकेशन में याद रखना है आपको. फर्स्ट जनरेशन ओरली यूज्ड सेफालेक्सिन, सेफेटोक्सिल, सेफेराइडिन. मतलब इनमें सब में CF के बाद में ए आता है या CPH के बाद में ए आता है. इसमें पेरेंटल में सेफाजोलिन. सेकंड जनरेशन में ओरल में सेफाक्लोर, सेफरोक्सिम, देन सेफाप्रोजिल. पेरेंटल में आता है सेफरोक्सिम, सेफोटेटन, सेफोक्सिटिन, सेफमेटाजोल. थर्ड जनरेशन में देखो सेफिक्सिम ओरल है, सेफोडोक्सिम ओरल है, सेफोब्यूटिन, सेफडाइटोरेन, सेफडिनिर, नीर, टेन, रेन, जिम. सेफोडोक्सिम
सेप्टिजोक्सिम, सेप्टाक्सोन, सेप्टाजिडिम, सेफिपाइराजोन, ये आर द पेरेंटल। फोर्थ जनरेशन में पी आएगा, सेफोपाइम, सेफी है ना, सेफोपाइमेन, सेफिपाइमेन, सेपायरोम, सेफिपाइम, इसमें पी आएगा। एंड फिफ्थ जनरेशन में क्या आएगा, रोल आएगा, रोल ना, सेप्टारोलिन, सेप्टा बाइपायरोल, रोल आएगा यहाँ पे, रोल, इसे याद रखना है इसको। सेप्टाक्सोन एंड सेफोपाइराजोन, दे आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल। नाउ फर्स्ट जनरेशन दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो पहले जनरेशन के दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, नॉट एक्टिव अगेंस्ट द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। बट सेकंड जनरेशन जो है दे आर एक्टिव अगेंस्ट द मोर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड लेस एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में क्या आता है, ई कोलाई ना, क्लेप्सिलिया, प्रोटियस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, बैक्टीरियोइड्स। ओनली सेफोक्सिटीन है ना, सेफोक्सिटीन, सेफोमेटाजोल एंड सेफोटेटान, दे आर एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरियोइड्स में ये एक्टिव है एसिक, बाकी ग्राम नेगेटिव में है ना। Then third generation cephalosporins, they are active in the gram positive cocci like Stephalo, gram negative cocci like Gono, gram negative bacilli like Enterobacter, Serratia and Pneumono, and some are active in the anaerobic bacteroids, right? And fourth generation they are having same spectrum of activity. उसकी यूजेस तो आपने देख लिए। मोनोबैक्टम में दिस ग्रुप ऑफ ड्रग अदर बीटा लैक्टम में मोनोबैक्टम में एजिट्रोनाम आता है। मोनोबैक्टम में एजिट्रोनाम आता है, एजिट्रोनाम active against the beta lactam is producing gram negative rods. Only beta lactam antibiotic that can used in the patient with a severe allergy to the penicillin. इसको पेनिसिलिन का सेफलोस्पोरिन का एलर्जी है, उसमें ये एजिट्रोनाम यूज करना है मोनोबैक्टम में। कार्बोपेनम में इमीपेनम, डोरीपेनम, मेरोपेनम, इट्रापेनम, ये ड्रग के एग्जांपल है। इमी, डोरी, मेरो एंड इट्रा, ठीक है। तो इमीपेनम is inactivated by renal dehydroperoxidase 1, so it is combined with the cellulastin. Cellulastin is the inhibitor of that enzyme. This will end your chapter. This will end your cephalosporins also.